exercises? Now, when you are breathing, find that there is a space in between, which you just need a second. Breathe in. Now give it with me. Now breathe out. Now leave it with me. जय श्री माता जी सबको. जय श्री माता जी to all. जय श्री माता Hope जी my भैया. voice is visible, audible. जय श्री माता जी भैया. जय श्री माता. जय श्री श्री माता माता जय श्री जी. माता जी. అందరికీ जय श्री माता जी. అందరికీ जय श्री माता जी. जय श्री माता जी. मैं जय श्री सबको माता जी म्यूट भैया. करता हूँ. म्यूट ऑल नाउ. We'll get started. जय श्री माता जी. हम सब लोग अभी नतमस्तक होके श्री माता जी को वंदन करके कुंडली उठा के बंधन लेंगे. We'll all collectively bow down to श्री माता जी, then raise our कुंडली and take बंधन. कुंडली उठा के बंधन लेने के बाद दोनों हाथ अपने गोद में. We'll have both our palms on our lap open towards श्री माता जी. We'll observe if you're getting equal vibrations in both our palms. महसूस करेंगे दोनों हाथों में समान तरीके से वाइब्रेशंस आ रही हैं. आंखें खुले रखें. कीप और आइज ओपन. माँ के चरण देखते रहेंगे. We'll continue to appreciate Shri Mataji's lotus feet. अभी अपना राइट हैंड धरती माँ पर. We'll put our right hand on Mother Earth. Shri Mataji, please remove all our past thoughts, all our conditionings and imbalances in our Ida Nadi and give it to Mother Earth. श्री माता जी, कृपा करके हमारे ईड़ा नाड़ी में जो भी भूतकाल के विचार है, जो भी कंडीशनिंग्स है, जो भी असंतुलन हमारी ईड़ा नाड़ी में है, उसे कृपा करके आप धरती में विलीन कर दीजिए माँ. और अपना तालु भाग से महसूस करते रहेंगे राइट हैंड में क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड में क्या हो रहा है. फ्रॉम टॉप ऑफ आवर हेड विल ऑब्जर्व व्हाट्स हैपनिंग इन आवर राइट palm, व्हाट्स हैपनिंग इन आवर लेफ्ट palm.
श्री महाकाली साक्षात श्री भैरवनाथ साक्षात। ओम त्वमेव साक्षात श्री महाकाली साक्षात श्री भैरवनाथ साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। मंत्र बोलने के बाद अपने हाथों में बदलाव महसूस करेंगे। विल कंटिन्यू टू ऑब्जर्व द चेंजेस हैपनिंग आफ्टर सेइंग द मंत्र। ऑब्जर्विंग इज द की। क्योंकि ऑब्जर्विंग ही साक्षी तत्व है। अभी अपना राइट हैंड अपने गोद में, विल पुट आवर राइट हैंड ऑन आवर लैप, लेफ्ट हैंड टुवर्ड्स स्काई, लेफ्ट हैंड आकाश की ओर। माता जी, प्लीज रिमूव ऑल माय फ्यूचर थॉट्स, एक्शन, प्लानिंग एंड हीट फ्रॉम माय पिंगला नाडी एंड गिव इट टू ईथर, द स्काई एलिमेंट। माता जी कृपा करके हमारे पिंगला नाडी में जो भी भविष्यकाल के विचार है, जो भी प्रणालिका हम बना रहे, जो भी गर्मी है, उसे आप कृपा करके आकाश में विलीन कर दीजिए माँ। और अपना तालु बाग से महसूस करते रहेंगे राइट हैंड में क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड में क्या हो रहा है। फ्रॉम टॉप ऑफ आवर हेड विल ऑब्जर्व व्हाट्स हैपनिंग इन आवर राइट palm, व्हाट्स हैपनिंग इन आवर लेफ्ट palm। श्री महासरस्वती साक्षात श्री हनुमान साक्षात। ओम त्वमेव साक्षात श्री महासरस्वती साक्षात श्री हनुमान साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। अभी दोनों हाथ श्री माता जी को, बोथ और palms to श्री माता जी। We'll take our right hand and put it on our front आग्ने। राइट हैंड लेके अपना फ्रंट आग्ने पे रखेंगे। सर को थोड़ा झुका लेंगे। We'll bend our head a little bit and here we'll say the Lord's prayer. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, power, and glory forever and ever. Amen. थोड़ी देर के लिए महसूस करते रहेंगे लेफ्ट हैंड में क्या हो रहा है, जहाँ हाथ रखा हुआ क्या हो रहा है। We'll keep observing for some time what's happening in our left palm, what's happening in our right palm, which is on front again.
अभी अपना राइट हैंड अपने गोद में ले लेंगे. We'll bring our right hand down on our lap. And here we will say the 3 Mahamantras. 3 Mahamantra बोलेंगे और गणेश मंत्र. त्वमेव साक्षात् श्रीमहालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीकल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीकल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीगणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. जय श्री माता दी. थोड़ी देर के लिए अपना सहस्रार का आनंद लेते रहेंगे. विल कंटिन्यू टू एंजॉय और सहस्रारा. अभी अपना राइट हैंड
लेफ्ट हार्ट पे रखेंगे. विल पुट आवर राइट हैंड ऑन द लेफ्ट हार्ट एंड विल से मॉर्निंग प्रेयर. There's a beautiful shloka which I had told Mahatma Ji that he should put it first. He said, I was a very small girl, but he listened to me, which is a beautiful thing. Pratar namami. The first thing you have to say, Pratar namami rudhi sanspuradma tattvam satchit sukham paramahansa gatim turiyam. Meaning, early in the morning, I pray to that principle of my spirit, which is the truth, the attention and joy, so that I should go to the highest state of my ascent. संस्फुरात्म तत्वम सच्चित सुखम परमहंस गतिम तुरीयम तुरीयम यत् स्वप्न जागर सुषुप्त मवैति नित्यम तद ब्रह्म निष्कलमहम न च भूत संघा. अर्थ कळला का? प्रातर नमामि, मैं सवेरे उठ करके नमस्कार करता हूँ. हृदय संस्फुरात्म तत्व, हृदय में स्फुरन पाने वाले उस तत्व को. कौन सा तत्व है? डिवाइन लव. उस तत्व को मैं याद करता हूँ, उसको मैं नमस्कार करता हूँ. प्रातर नमामि हृदय संस्फुरात्म तत्वम सच्चित सुखम. सच्चित सुखम, जो सत्य है, चित है और सुख है. परमहंस गति तुरीयम. तुरीय दशा उसे कहते हैं जिसमें आप आ गए. पार होने का मतलब है तुरीया. आप उस दशा में आ गए हैं, परमहंस गति की दशा में आ गए. परमहंस गतिम तुरीयम, उस दशा का, उस अवस्था का मैं नमस्कार करता हूँ. अभी तो जो आए नहीं वो गा रहे हैं, लेकिन आप आ चुके. प्रातर नमामि हृदय संस्फुराद तस्मम सच्चित सुखम परमहंस गतिम तुरीयम यत् स्वप्न जागर, जो स्वप्न जागर, स्वप्न में, जागृत अवस्था में, सुषुप्ति मवई की नित्य, सुषुप्ति अवस्था में सब में नित्य रहता है. चाहे आप जागते रहें, चाहे आप सोते रहें, चाहे आप सबकॉन्शियस से रहें. सुषुप्ति माने सबकॉन्शियस में, और उससे भी अनकॉन्शियस में रहें, जहाँ वो नित्य रहता है. यत् स्वप्न जागर सुषुप्त मवई की नित्यम तद ब्रह्म निष्कलमहम, वो अलेपा, वो निर्लेप ब्रह्म मैं हूँ. न च भूत संघ, मैं ये जो भूत संघ है, भूत संघ माने 5 तत्वों से बना हुआ ये शरीर मन बुद्धि जो है वो मैं नहीं, लेकिन वो ब्रह्म है जो नित्य अविनाशी हमेशा हर स्थिति में रहता है. इस श्लोक को याद कर लेना चाहते हैं. प्रातर नमामि हृदय संस्फुरात्म तत्वम सच्चित सुखम परमहंस गतिम तुरीयम यत् स्वप्न जागर सुषुप्त मवैति नित्यम तद ब्रह्म निष्कलमहम न च भूत संघ. ये हम लोगों के लिए जो रियलाइज हो गए हैं, उनके लिए बहुत बड़ा मंत्र है कि हम वो हैं जो निर्लेप, निरंजन, निराकार ब्रह्म है. हम ये जो भूत संघ है, जो पंच महाभूत मिलकर के उनके संघात से बना हुआ जो बाहर का ढकोसला है, वो नहीं.
जो अविनाशी अंदर विराजता है वही हम हैं। ये तभी होगा जब हमारा चित्त उसमें बैठे। चित्त तो वहाँ बैठ गया, बिल्कुल बैठ गया है, किंतु वो चित्त अभी भी बाहर की ओर दृष्टि की ओर। उसे जैसे आप अंदर की ओर दृष्टि कर लेंगे, आप परमहंस गति के दशा में बैठेंगे। उस गति पर है, आपको बिठा दिया है उस गद्दी पर कि आप परमहंस हैं। लेकिन परमहंस को अपने जो कीचड़ से लगे हुए पैर हैं उन्हें साफ करके और अपने आसन पे उस इज्जत के साथ बैठ जाना चाहिए, जैसे कि कोई राजा अभिषेक के बाद बैठ जाता है। अभी अपना राइट हैंड अपने गोद में ले लेंगे। विल ब्रिंग बोथ आवर पाम्स बैक ऑन आवर लैप टुवर्ड्स माता जी। विल कंटिन्यू टू एंजॉय आवर सहस्रारा। सहस्रार का आनंद लेते रहेंगे। Now we'll take our right hand and put it 2 inches above the head. राइट हैंड सर के 2 इंच ऊपर, और महसूस करते रहेंगे वाइब्रेशंस आ रहे कि नहीं और ब्रह्म रंध्र खुल रहा है कि नहीं. We'll keep observing if vibrations are coming and if the Brahma Randhra is opening up. वे राइट हैंड नीचे ले आएंगे, लेफ्ट हैंड सर के 2 इंच ऊपर. विल bring our right hand down, left hand 2 inches above the head. लेफ्ट हैंड नीचे ले आएंगे, राइट हैंड सर के 2 इंच ऊपर. We'll bring our left hand down, right hand 2 inches above the head, and we'll slowly keep lifting our right hand as high as we can feel the vibrations. आहिस्ता आहिस्ता राइट हैंड को ऊपर उठाते जाएंगे जहां तक हमको ये वाइब्रेशंस का एहसास हो रहा है. Once it's very high as the hand can go, we'll bring our hand down, leaving our attention up there. चित्त को ऊपर छोड़ के जहां तक ये हाथ गया वहां चित्त छोड़ के अपना राइट हैंड को नीचे लेंगे. अभी लेफ्ट हैंड को सर के 2 इंच ऊपर. Now we'll take our left hand 2 inches above the head. Now we'll keep lifting our left hand till the height we can actually feel the vibrations. लेफ्ट हैंड को भी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लेते जाएंगे जहां तक ये वाइब्रेशंस का एहसास हो रहा है.
हाथ पूरी तरह ऊपर जाने के बाद वहां चित छोड़ के दोनों हाथ अपने गोद में, leaving our attention there, we'll bring both our palms down. Now we'll have our attention on our Sushumna Nadi, our axis. चित सुषुम्ना नाड़ी पर मूलाधार से सहस्रार से जहाँ चित छोड़ा वहां, और वहां से दोनों हथेली को महसूस करें. From there we'll observe the center of both our palms. और ये एक्सिस में रहने का हम प्रैक्टिस करेंगे. We'll continue to stay in the practice of staying on the axis. As we now listen to Shri Mataji's Pandharpur speech. ये पंढरपुर स्पीच जैसे सुन रहे हैं, हम ये एक्सिस में रहने का प्रैक्टिस करेंगे. और कभी कभी अपना लेफ्ट हार्ट को भी महसूस करते रहेंगे. एंड समटाइम्स विल कंटिन्यू टू ऑब्जर्व लेफ्ट हार्ट टू. लेफ्ट हार्ट अपना एक्सिस, और एक्सिस एंड आवर लेफ्ट हार्ट महसूस करते हुए अभी पंढरपुर महाशिवरात्रि स्पीच सुनेंगे. विल लिसन टू द महाशिवरात्रि पंढरपुर स्पीच. So now we all have arrived. It's all right. Now this place has been chosen because they said that there are lots of horrible people the other way around. Still we are having their problems. All right. See, you must know these are modern times. And modern times have lots of complications. सर्व मंडळी आली का? तर आधी इंग्लिशमध्ये सांगते आणि मग मी मराठीत सांगेन, कारण काय ह्या लोकांना अगदी काहीच समजत नाही, ते बरोबर नाही. In these modern times, a place which is supposed to be a holy place becomes the most unholy place. It's such a topsy-turvy condition these days. And when we are trying to establish something very fundamental, it's like a little seedling that has to come out of the stones. It has to fight lots of things, so we have to keep our brains intact and be sensible about everything, and try to see what we can achieve through our patience and understanding. It's very important. Today I think is a very great day for all of us, because this place is the place of Virat, of Sri Vithala. It's the place where Sri Vithala appeared to a devoted son, and when he asked him that you better stand on a break, he stood there. And they say that he stood there waiting. Some people say that the statues that we see came out of the Mother Earth on this sand. And that's what Pundarikaksh carried, saying that these are the ones who came to see me and my parents. I was busy with them. So they are standing on the same brick which I threw. Now the whole story has to be taken in a very
sensible way with a common sense in it, that God Himself is capable of all kinds of miracles. We who are created by God are doing some things which look miraculous. Say, if you take about 100-year-old situation of this world, we can say that today we are seeing many things which could be miraculous. 100 years back, nobody could have thought that we could have all these arrangements done here in such a far-fetched places. But all these miracles come from the power of God. So we are the creator of that wee bit, very wee bit of that miracle. So all the miracles of God cannot be explained and should not be explained. They are beyond our minds. And to make people feel the presence of God, God can do anything. He can move into all the 3 dimensions and also in the 4th dimension. He can do whatever He feels like. That's what you have seen now in your every day-to-day life. How many miracles take place to all of you. And you can't understand how it works out. Even it works out on things which are not living. And people are quite amazed how these things happen. So we have to believe now, after seeing all this ourselves, that He is God. And He can do anything that He feels like. And we are nothing. We are nothing. There should be no rationality about it of understanding God's miracles. How can it be? How could it be? You can't explain. Only when you achieve that state of mind, where you believe through your experiences that God is all powerful. It's very difficult. This concept is very difficult because we are limited people. We have limited powers. We cannot understand how God could be all powerful because we haven't got the capacity. So this God, who is our creator, who is our preserver, the one who desired that we should exist, who is our existence itself, is an all-powerful God. All-powerful. He can do whatever He likes with you. He can create another world. He can destroy this world. It's only if He has to desire. My idea of coming to Pandharpur for Shiv Puja was this, that Shiva represents the spirit. And the spirit is residing in all of you, in your hearts. The seat of Sadashiva is on top of your head, but is reflected in your heart. Now your brain is the Vittala. So to bring spirit to your brain means enlightenment of your brain. Enlightenment of your brain means the limited capacity of your brain has to become unlimited in its
capacity to realize God. I will not use the word understand, but to realize God. How powerful He is, how miraculous He is, how great He is. The another is that the brain of man can create, of course, out of the dead. But when the spirit comes into brain, then you create living things, living work of Kundalini. Even the dead start behaving like living because you touch the spirit in the dead. Like the nucleus inside every atom or a molecule has the spirit of that molecule. And if you become your spirit, we can say the brain of a molecule or an atom is like the nucleus, body of the nucleus. But the one that controls the nucleus is the spirit that resides within the nucleus. So now you have got the attention or the body, the whole body of the atom, then the nucleus, and inside the nucleus is the spirit. In the same way, we have this body, the attention of the body. And then we have the nucleus is the brain. And the spirit is in the heart. So the brain is controlled through the spirit. How? That around the heart there are 7 auras. Which can be multiplied into any number. 7 raised to power 1600, which are the ones which watch the 7 chakras raised to power 1600. 16,000, sorry. Now this spirit is watching through this aura. Watching, I am again saying watching. Through this aura. Can you sit down? Can you sit down? I think would be better. There's no need to bother once you have put it up. This aura is watching the behavior of your 7 centers in your brain. Is also watching all the nerves that are working in the brain. Watching again. But when you bring the spirit into your brain, then you go 2 steps ahead. Because when your Kundalini rises, she touches the Sadashiva
and Sadashiva informs the spirit. Informs in the sense reflects in the spirit. So that's the first state where the watching auras start communicating to your different chakras in the brain and integrating it. But when you bring your spirit to your brain, this is the second state. Then you really become self-realized in the full way. In the full way. Because then yourself, that is the spirit, becomes your brain. Action is very dynamic. It opens then the fifth dimension in the human being. First, when you become realized, collectively conscious, and start raising the Kundalini, you cross the fourth dimension. But when your spirit comes into your brain, then you become the fifth dimension, means you become the doer. Our brain now, for example, says, all right, lift this thing up. So you touch it with your hand, you lift it up. You are the doer. But when the brain becomes the spirit is the doer. And when spirit is the doer, then you become a complete Shiva, self-realized. In that state, if you get angry, you are not attached. You are not an attached person to anything whatsoever. If you possess anything, you are not attached. You cannot attach because spirit is detachment. It's complete detachment. You don't bother about any attachments whatsoever. Even for a second you are not attached. Now, I would say, to understand the detachment of spirit, we should study ourselves very well, clearly. How are we attached? We are attached, firstly, by our brain. Mostly by our brain. Because all our conditionings are in our brain and all our ego is also in our brain. So all emotional attachments are through our brain and all our egoistical attachments also are through our brain. That's why it is said that after realization one must try to practice the Shiva Tattva by practicing detachment. जरा मला शाल दे. तसं शिवाची फार थंड असणार सगळं. Now, how do you practice this detachment? सगळ्यांना इंग्लिश समजता आहे ना थोडं थोडं? Because we get attached to something, of course through our brain, but through our attention. So we try to do what we call Chitta Nirodh, is to control your attention. Where is it going? In the practice of Sahaja Yoga, if you have to rise higher, you have to improve your own instrument and not the instrument of others. This is one thing one should know. For definite.
Now you just watch your attention, where is it going? Watch yourself. As soon as you start watching yourself, your attention, you will become more identified with your spirit. Because if you have to watch your attention, you have to be your spirit. Otherwise, how will you watch it? So now see, where is your attention going? First, the attachment is in all gross ways to your body. So we see Shiva, there is no attachment to his body. He sleeps anywhere. He goes to the cemeteries and he sleeps there. Because he's not attached, he can never be caught up by any booths or anything, nothing of the kind. He is detached. The detachment is to be watched and seen through your own attachments. Now, because you are realized souls, not yet, the spirit has not come into your brain, of course, but still you are realized souls. So what you can do is at least to watch your attention, you can do that. You can watch your attention very clearly by seeing where your attention is going. And then controlling your attention also you can do. Very simple. To control your attention, you have to just remove your attention from this to that. Try to change your priorities. All this has to be done now, after realization, a complete detachment. So the body demands comfort. Try to make body uncomfortable a little bit. Try. What you think it to be comfortable, try to make it little uncomfortable. That's why people went to Himalayas. See, coming to this place itself has caused us a lot of problems. But going to Himalayas, you can imagine. So after realization, they used to take their body to Himalayas. All right, go through all this. Let's see how you act. So what you call the penance side starts now. In a way, it's a penance which you can do very easily because now you are realized souls. With enjoyment, little, try to make this body. For Shiva, it doesn't matter whether he is in a cemetery or in his own Kailasha or anywhere. Where is your attention is, you see. That your human attention is hopelessly bad. Very entangled nonsense it is. We did this because of this. There's an explanation. Or others have to give an explanation. No explanation is needed to be given or to be accepted or to be asked for. No explanation. To exist without explanation is the best way. In a simple Hindi language, jaise rakhahu taise hi rahu. Whichever way you keep me, I'll remain in that state. And I'll enjoy. Further in this poem, Kabira says, if you make me go on an elephant, means the royal conveyance, I'll go. If you make me walk, I'll walk. Jaise rakhahu taise hi rahu. So no reaction on that point. No reaction. First no explanation, no reaction. Now, second is about food. So that's the first seeking human
beings had as animals. No attention on food. Whether you have salt or not, whether you have this or that, no attention on food. Actually, you should not remember what you ate this morning. But we think as to what we are going to eat tomorrow. We consume food not for running this body, but for sort of a more satisfaction of tongue pleasures. Once you start understanding that pleasure is a sign of gross attention, any kind of pleasure is a very gross sensationalization. Sensations. Very gross it is. But when I say no pleasures means, doesn't mean that you should become serious people and people of sort of as if somebody is dead in your family. But you should be like Shiva. So detached. She came on a bull which was running very fast to get married. He was sitting on a bull with 2 feet like this, you see. And the bull is running fast and he's holding the bull. The feet like this. And he's coming for his wedding. And with him are coming people with one eye, without noses, all kinds of funny people coming with him. And his wife feeling quite embarrassed at the nonsensical things people are talking about Shiva. He's not bothered. What's his reputation would be, this thing. But that doesn't mean that you become hippies. You see, this the problem is that once you start thinking like that, you become hippies. Many people believe that if you try to behave like Shiva, you become Shiva. Many believe that way. That if you take ganja, you become Shiva, because Shiva is to take ganja, because he was consuming all that to finish off from this world. For what does it matter whether it's a ganja or anything? Give him anything, he'll never get drunk. No question. He's consuming all that. Or they think if they live like Shiva, the way he was detached about things, least bothered about his appearances. What appearance Shiva needs is that whatever he appears as is beauty. He doesn't need anything to be done. So, attachment to anything is ugliness. It's ugliness. It's nonsense. But you can dress up whatever way you like. Or even if you are in the most ordinary dress, you look the most magnificent person. But it's not that if you say that, all right, so in these circumstances, let us go about on one sheet wrapped around. The beauty that has evolved within you through spirit gives you that power that you can wear whatever you feel like. Makes no difference to your beauty. Your beauty is there all the time. But have you achieved that state? And that state only you achieve when your spirit enters into your brain. With ego-oriented people is more difficult. And that's why they cannot enjoy things. At the slightest pretext, they topple down. And spirit, which is the source of joy, just doesn't come. Doesn't show. The joy is beauty. The joy itself is beauty. But that is a state one has to achieve. Attachments come by various methods. If you go a little ahead with it,
Then you have attachments of your family. What will happen to my child? What will happen to my husband? What will happen to my mother, to my wife? This, that nonsense. Who is your father and who is your mother? Who is your husband and who is your wife? For Shiva, he doesn't know all these things. To him, he and his power are inseparable things. So he stands as singular personality. There's no duality. When there is duality, then only say, my wife. You can't say, my nose, my ears, my hands, my. Go deep down. Till you say my, there is some duality. But when I say I, the nose, then there is no duality. Shiva the Shakti, Shakti the Shiva, there is no duality. But we live throughout on our duality, and because of that there is an attachment. If there is no duality, what is the attachment? If you are the light and you are the lamp, then where is the duality? If you are the moon and you are the moonlight, then where is the duality? If you are the sun and you are the sunlight, you are the word and you are the meaning, then where is the duality? But when there is this separation, there is duality. And because of this separation, you feel attached. Because if you are that, how will you be attached? Do you see that point? Because there is a difference and a distance between you and yours. That's why you get attached to it. But it's me. Who is the other? This whole universe is me. Who is the other? Everything is me. Who is the other? It's not that it's a brain wave or an ego brain wave. बसा 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 मी मागीन जेव्हा लागलं ते सगळ्यांना डिस्टर्ब होतंय. बसा, फार गंभीर विषय होऊन राहिला. त्यावेळेला काही नको मला. 9 तास जरी बसले ना तरी मला काही लागणार नाही. बसा, आरामात बसा, डिस्टर्ब नाही करायचं, बसून घ्यायचं. So who is the other? Nobody. That's only possible when your spirit comes into your brain and you become part and parcel of Virat itself. Virat is the brain, as I told. Then everything that you do, when you show your temper, when you show your affection, when you show your compassion, anything, is the spirit that is expressing. Because brain has lost its identity, the so-called limited brain. It has become the unlimited spirit. I do not know. I really do not know how to give an analogy to a thing like that. But what we can do is to understand it. That if a color is dropped in the ocean, the ocean becomes colorful. Is not possible. But try to understand. If a little color, limited color, is dropped into the ocean,
the color loses its identity completely. Think of the other way around. If the ocean is colored and is poured into atmosphere or onto any part, any little wee bit, or onto any spot, onto any atom or anything, it all becomes colorful. So the spirit is like the ocean which has the light in it. And when this ocean pours into the little cup of your brain, the cup loses its identity and everything becomes spiritual. Everything. You can make everything spiritual. Everything. You touch anything is spiritual. The sand becomes spiritual. The land becomes spiritual. Atmosphere becomes spiritual. Celestial bodies become spiritual. Everything becomes spiritual. So is the ocean that is the spirit, while your brain is limited. So the detachment from your limited brain has to be brought in. All limitations of brain should be broken so that when this ocean fills that brain, it should break that little cup. And every bit of that cup should become colorful. The whole atmosphere, everything, whatever you locate should be colorful. Color of the spirit is the light of the spirit. And this light of the spirit acts, works, thinks, coordinates, does everything. This is the reason today I decided to bring Shiva Tattva to the brain. The first procedure is to take your brain towards the Shiva Tattva by telling it, see, where are you going, Mr. Brain? You're putting attention to this, you're putting attention to that. Getting involved now, detach. Become the brain yourself, only the brain. Detach. And then take this detached brain, completely filled with the color of the spirit. It will automatically happen. As long as you will have these limitations to your attention, it will not happen. So one has to really deliberately do this tapasya. Every individual. I'm with you. So you don't need any puja that way. But that state has to be achieved. And for achieving that state, you need the puja. I hope so many of you will become the Shiva Tattvas in my lifetime. But don't think I'm asking you to suffer. There is no suffering in this kind of an ascent. If you understand that this is the complete joy state, that is the time when you become Nirananda. That's the joy named in the Sastrara. The name of the joy is Nirananda, and you know your mother's name is Nira. So you become Nirananda. So today's worship of Shiva has a special meaning. I hope whatever we do in the outward way, in a gross way, happens also in the subtler way. I'm trying to push your spirits into your brains, but I find it rather sometimes difficult because your attention is still
involved. Try to detach yourself. Temper, lust, greed, everything. Try to reduce. Like in food, I told today, Warren, ask them to eat less, not like gluttonous people. You see, once in a while, on a day of big banquet or anything, you eat more, but you can't eat every time like that. It's not a sign of Sahaja. Try to control. Try to control your speech. Whether you express temper in your speech, or you express your compassion, or you are artificially compassionate. Try to control. I know some of you may not do much. It's all right. I'll try to tell you many a times. I'll try to help you. But most of you can do it. And you should try that. So on a deeper level from today, we start our Sahaja Yoga, where some of you may not attain, but most of you should try to go deeper. Everyone. For that you don't need persons who are very well educated or well placed. No, not at all. But people who meditate, dedicate, go deeper, because they are like the first roots which have to reach for others much deeper, so that others can follow. Now for today's puja, we'll have a very short Ganesh Atharvashesh. Just not washing my feet or anything much on it, but is a saying of Atharvashesha. And you can put, म्हणजे शिवपूजेला पाय वगैरे धुवायची काही गरज नाही, कारण ते शुद्धच आहे. Shiva is all the time clean, pure, immaculate. So what are you going to wash the immaculate? One may say that, Mother, when you wash your feet, we get your vibrations in the water, but so detached that there's no need to wash at a state where you get completely washed, completely cleaned out. Then we'll have a Devi Pujan, because Gauri, who is Virgin, is to be worshipped. So we'll say the 108 names of the Virgin. Then we'll do the Shiv Puja. I'm sorry, I cannot tell you everything in one short speech all about this. But detachment must start expressing itself in your realization. Detachment. What is surrendering is nothing. Because when you are detached, you are surrendered. Automatically. When you are holding on to other things, you are not surrendered. That's all. What is there to surrender me? I am such a detached person, I don't understand all that. What am I to get out of you? I am so detached. Nothing. So today I hope we all pray that, O Lord, give us strength and that source of attraction by which we give up all other attractions of all the pleasures of joy, of ego, of everything that we think of. But we should fall into the pure joy form of the Shiva Tattva. Absolutely.
I hope I've been able to explain to you why I am here today and why today is a very big day. You all who are here are especially very lucky people who should think that God has been kind to you, that He has chosen you today to be here to listen to this. And then once you get detached, you'll start feeling responsible. Abhiyukt, responsible. But the responsibility not giving ego, but responsibility which is executing by itself, which is expressing by itself, manifesting by itself. May God bless you. इस स्थिति में थोड़ी देर ध्यान में रहेंगे. We'll continue to stay in meditation in this state. यश माता जी, अभी हम थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, विटनेस प्रैक्टिस करेंगे. विल प्रैक्टिस विटनेस like how we do in witness practice, getting the spirit in the brain like Shrimati ji taught. ये स्पीच में जैसे माँ ने सिखाया, अपना राइट हैंड को सर के 2 इंच ऊपर ले जाएंगे. पहले विल टेक अवर राइट हैंड 2 inches above the head. We'll bring our right hand down, right hand नीचे ले आएंगे, लेफ्ट हैंड सर के 2 इंच ऊपर, लेफ्ट हैंड 2 inches above the head. We'll bring our left hand down, दोनों हाथ अपने नीचे, onto our lap, both our palms onto our lap. We'll observe our attention, अपना चित्त को देखेंगे. I will come below the ब्रह्मरंध्र, ब्रह्मरंध्र के ठीक नीचे आ जाएंगे. We'll continue to observe our attention. देखेंगे अपना चित्त किधर है. See if the attention is in the brain. तो अटेंशन ब्रेन में है कि नहीं देखेंगे, वहीं रहेंगे, वही चित्त को देखते रहेंगे. ऐसे देखते रहेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता क्या फर्क आ रहा है महसूस करते रहेंगे.
as we keep observing our attention. Observe the small changes that are happening in the brain. ब्रेन में छोटे छोटे नसों में कौन से नसों में ठंडक आ रही है महसूस करते रहेंगे. We'll continue to enjoy the coolness spreading in the brain. Observe wherever it is hard, if it is getting softer. महसूस करते रहेंगे जहां भी वो थोड़ा कड़क है वो आहिस्ता आहिस्ता नरम होता जा रहा है कि नहीं, ठंडापन बढ़ रहा है कि नहीं. आत्मा का प्रकाश में ये ठंडक बढ़ रही है कि नहीं, जो कड़क है वो नरम हो रहा है कि नहीं. The light of the spirit, let's observe the stoniness of the brain becoming softer, cooler.
वेयर इज माई अटेंशन, मेरा चित्त किधर है। अगर वो चित्त अपने मस्तिष्क के अंदर है, वो देखते रहेंगे। If our attention is inside the brain, let's keep looking at it and observe if it is getting softer and cooler. महसूस करते रहेंगे। जय श्री माता जी, आप लोग देख पा रहे हैं आपका चित्त किधर है? आर यू एबल टू नोटिस वेयर योर अटेंशन इज एंड आर यू एबल टू स्टे देयर? वहां रह पा रहे हैं कि नहीं? देखिए, जय श्री माता जी, थोड़ा बताइए आप लोग, आर यू एबल टू नोटिस योर अटेंशन? आप लोग अपना चित्त को महसूस कर पा रहे हो? और जब चित्त को देख रहे हो जो मस्तिष्क में है, तो वो ठंडक बढ़ रही कि नहीं? हाँ बेटा, बहुत अच्छा लगा। जय श्री माता जी, या बोलिए। very divine experience. రామ్ Yes, లోపలంతా that is very వాటర్ ఫ్లో అయిపోతుంది, చేతులు అరిచేతులన్నీ. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. చాలా బాగుంది. థ్యాంక్ యూ నాన్న. Others also are able to continue. They are able to stay nicely in spite of talking. Are you able to observe your attention and is the light of the spirit spreading in the brain? आप देखिए कि चित्त किधर है, और हम जब बात भी कर रहे हैं फिर भी वो चित्त मस्तिष्क में है क्या? मस्तिष्क में आत्मा का प्रकाश ठंडी के जैसा बढ़ रहा है क्या? జై శ్రీ మాతాజీ. यशमत आंटी, అదే అదే బ్రెయిన్ లోని ఒక పాయింట్ దగ్గర ఏమో అలా వాటర్ అలా కారుతున్నట్టు ఫీలింగ్. సేమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండి. అక్కడ ఏంటి ఇప్పుడు తిలకం పెట్టుకుంటే తిలకం కరిగిపోతే ఒక రకమైన వాసన వస్తుంది కదా, కుంకుమ గాని, అలాంటి ఒక ఫ్లేవర్ ఫీల్ అవుతున్నాను, ఒక వాసన. ఇంకా లోన నీళ్ళు చల్లగా ఉందా ఆంటీ? లోన చల్లదనం వస్తున్నది, అదేదో కారుతున్నట్టు, అక్కడ నుండి కారుతున్నట్టు బ్రెయిన్ నుండి వాటర్ ఫ్లో అవుతుంది రామ్, జస్ట్ లైక్ వారి చేతులు అన్ని తడి తడి అయిపోతున్నాయి లోపల. ఆ తిలకం కరిగిపోతే ఒక వాసన వస్తున్నట్టు, చెమటకి తిలకం కరిగిపోతే వాసన వస్తున్నట్టు, అలాంటి వాసన బాగా వస్తున్నది. ఓకే, లోనే ఉందామండి కొంచెంసేపు. విల్ కంటిన్యూ స్టే ఇన్సైడ్ ఫర్ సమ్ టైమ్. జై శ్రీ మాతాజీ. దేశమది అండి.
obey through your vibratory awareness. Any question you want to ask, anything you want to do, you must obey it through your vibratory awareness. Now, some people are not so sensitive. That's true. The reason why they are not sensitive is because they think about it. Now, you think with your brain. Alright? If your brain can be enlightened, then you will think as the divine thinks and your sensitivity will improve. Because sensitivity comes from the central nervous system. Now, in the central nervous system, if there is any blockage, it is actually in the brain. Because all the centers are represented in the brain. So, the best thing is to say that, Mother, come in my brain. Please reside in my brain. Please make your room in this brain. You be the controller of this brain. Let this brain be guided by your divine wisdom. And you don't think for yourself. And this word, I think, should be dropped completely from surgery. I think means goes on, let's see, funny way. ये सेंसिटिविटी को थोड़ा बढ़ाने के लिए हम एक और चीज कर सकते हैं, जैसे अभी माँ ने बताया, वी कैन डू वन मोर थिंग टू इम्प्रूव द सेंसिटिविटी इन आवर ब्रेन. नाउ व्हेन वी इम्प्रूव द सेंसिटिविटी इन आवर ब्रेन, वी इम्प्रूव द सेंसिटिविटी ऑफ द होल नर्वस सिस्टम. उसके लिए यहाँ प्रार्थना कर सकते हैं, माँ कृपा करके आप मेरे मस्तिष्क में आइए. माँ कृपया आप मेरे मस्तिष्क में निवास करिए. कृपया इस मस्तिष्क में अपना स्थान बनाइए. माँ आप इस मस्तिष्क के नियंता बने. इस मस्तिष्क को अपने दिव्य ज्ञान द्वारा निर्देशित करें. Mother, please come in my brain. Please reside in my brain. Please make your room in this brain. You be the controller of this brain. Let this brain be guided by your divine wisdom.
जय श्री माता जी। अभी दोनों हाथ जोड़ेंगे। विल जॉइन बोथ आवर हैंड्स। Thank you very much, Shri Mataji, for this beautiful meditation. अभी कुंडली उठा के बंधन लेंगे हम लोग। एक उत्सव कर लेंगे। विल रेज और कुंडली टेक बंधन। अभी जिसको ध्यान करना है वो क्या ध्यान करते रहे, और जो फुटसो कर सकते हैं वो फुटसो करेंगे। अभी ऑल अदर्स लेट्स अरेंज फॉर फुटसो। विल डू फुटसो इन अ मिनट। 1 मिनट में फुटसो शुरू करते हैं। चलिए 2 मुट्ठी पर नमक डालते हैं। फुटसो कर रहे हैं। 2 मुट्ठी बना। विल पुट 2 fish also। पानी को बंद लेंगे। ओम स्वामी साक्षात श्री समुद्र देवता, साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। श्री माता जी कृपा करके ये पानी को समुद्र के पानी जैसे बना दीजिए, और ये समुद्र के पानी के माध्यम से हमारे अंदर जो भी असंतुलन है उसे निकाल दीजिए। ये दोनों पैर पानी में। विल पुट बोथ आवर फीट इन द वाटर। राइट हैंड टुवर्ड्स श्री माता जी, लेफ्ट हैंड टुवर्ड्स स्काई। राइट हैंड श्री माता जी को और लेफ्ट हैंड आकाश की ओर। पूरी में निश्चितता के साथ साक्षी भाव से श्री माता की बिल्ली या श्री माता के चरण देखते रहेंगे। In patient silence and witness, we'll keep looking at Shri Mataji's bindi or Shri Mataji's charan.
जय माता जी, हम लोग पहला फुटस्टेप कर रहे हैं। राइट हैंड शिमाती की ओर है, लेफ्ट हैंड आकाश की ओर है। वी आर डूइंग आवर फर्स्ट फुटस्टेप एंड राइट हैंड इज टुवर्ड्स शिमाती जी, लेफ्ट हैंड इज टुवर्ड्स स्काई। चलिए ईगो सुपर ईगो ड्रॉप करते हैं। विल टेक अ राइट हैंड and put it on the ego, left hand on the super ego. Cross your hands and pull along the Ida Pingla, any heat that is there in the Ida Pingla, and throw it into water. 7 बार ईगो ईगो को ड्रॉप करते हैं, 7 times. We'll pull the heat from the ego super ego along the Ida Pingla and throw it into water. जो भी गर्मी ईड़ा पिंगला में है, अहंकार प्रति अहंकार में है, निकाल के पानी में फेंक दें 7 बार, 7 times. फिर अपने कंधों से, from the shoulders, ललित चक्र, श्री चक्र,
फिर अपने दोनों स्वादिष्टान पीछे से दोनों स्वादिष्टान पे हाथ रखेंगे और पैरों के तले गर्मी निकाल के पानी में फेंकेंगे. Pull along the legs and throw it into water. Whatever heat is there from the swadhisthana, pull along the legs and throw it into water 7 times. पैर धो लेंगे, वॉश ऑफ. पानी को बगल में रख लीजिए. You can put the water aside. अभी दोनों हाथ जोड़ेंगे. We'll join both our hands. We'll say thank you very much, माता जी. भी कुंडली उठा के बांध लेंगे. We'll raise our कुंडली, take बांध. जय श्री माता जी. अभी 13 मिनट का ब्रेक है. नाउ देर इज ए 13 मिनट ब्रेक, आफ्टर विच वी विल हैव शू बीट. उसके बाद हमारी शू बीट होगी 7:05 को. अभी तब तक मैं यहाँ हूँ. अगर जिसको भी दूसरा फुटसॉक करना है तो वो अभी कर सकते हैं, मगर 7:05 को अपना शू बीट है. Others, anyone if wants to do foot soak till then, they can do foot soak or they can take a break. Foot soak कर सकते हैं या थोड़ी देर के लिए ब्रेक रह सकते हैं. और मैं यहाँ हूँ. और कोई क्वेश्चंस है, सजेशंस है, एक्सपीरियंस शेयर करना है, I'm here in case there are experiences to share or if you have suggestions or if you have questions. जय श्री माता जी भैया. हाँ जयश्वंत भैया. भैया आपसे एक रिक्वेस्ट था. हाँ. एक्चुअली मैं और मेरी वाइफ शालिनी दोनों ही माँ की कृपा से विराट मेडिटेशन अटेंड करते हैं. तो अभी 1 महीने से शालिनी जो मेरी वाइफ है लगातार अटेंड कर रही थी. ओके. और माता जी की कृपा से उनको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस, जो परम चैतन्य का अनुभव है, बहुत अच्छी तरह से हुआ. और जो पहले वो फील नहीं कर पाती थी, अब वो इजीली फील कर पा रही हैं. ओके. और ये माँ की बहुत बहुत ब्लेसिंग्स रही हैं. लेकिन अभी बस ये परसों एक छोटा सा ये इंसिडेंट हुआ. वो सुबह 5 बजे जरा मेडिटेशन के लिए आई थी श्री माता जी वाले रूम में. तो निकलते समय थोड़ा सा जल्दी हो गई. केटल में कुछ गर्म पानी हो रहा था. तो जो चौखट होती है वो उनके पैर के तलुए से, मतलब उंगलियों से टकरा गई तकड़ी करके. तो कन्नी उंगली के बराबर वाली उंगली थोड़ा सा चोटिल हो गई. हमने थोड़ा लिटाया, लेकिन शाम को एक्सरे कराने के बाद पता लगा वो थोड़ा सा फ्रैक्चर हो गया है उसमें. तो वो उनको प्लास्टर भी पैकअप करा दिया है हमने उनको. तो एक तो आपसे सजेशन लेना है कि ऐसी कंडीशन में ना, जैसे विराट मेडिटेशन आज वो सुबह भी अटेंड करने के लिए बैठी थी मेरे साथ में, लेकिन वो जब बैठी थी तो थोड़ा सा पैर लटका के बैठ गई, तो उनका पैर सूज गया था. तो मैंने थोड़ी देर पहले उनको फिर बेड पे शिफ्ट कर दिया. मैंने कहा शन्नी तुम यहीं से चित्त से अटेंड कर लो. मैंने थोड़ा स्पीकर भी चलाए थे, हम आपके माइक लगा के ना स्पीकर चला देते ताकि वहां तक साउंड पहुंच सके. और अगर इसके विषय में जो भी आपको सजेशन प्लीज देना हो भैया, तो प्लीज बता दीजिएगा हमें. जैसे वो ऐसे टाइम में जल क्रिया या शुभिडिंग शायद नहीं कर पाएंगी, या वो एक पैर से कर सकती हैं अगर चाहें तो थोड़ा सा सजेस्ट कर दीजिए प्लीज. या नहीं, सब ठीक है अब. और फ्रैक्चर के लिए जो भी करना है वो कर रहे हैं ना डॉक्टर ने? हाँ हाँ, वो उन्होंने उसमें प्लास्टर बांध दिया है भैया, वो फाइबर वाला. हाँ ठीक है, तो वही अच्छा है. वो ठीक हो जाने दीजिए, फिर बाद में बाकी सब कर अच्छा. सकते हैं. तब तक तो नॉर्मल ध्यान कर सकते हैं. अच्छा फुटसोक भैया. तो मुश्किल है ना, हाँ, फुट तो सपोर्ट. रहने दीजिए. वो ठीक हो जाने तक इंतजार करेंगे. अच्छा नहीं तो तो आधा आधा हम
एक मुश्किल होगा, दर्द होगा, रिलैक्स करना अच्छा है। अच्छा भैया, अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है भैया, हम तो करते रहेंगे। उनको थोड़ा सा ये बोल देंगे ध्यान करना है या जैसे भी करना है तो वो बेड पे कर सकती है ना भैया? हाँ, है ना, वैसे ही। ठीक, ठीक है भैया, थैंक यू भैया, थैंक यू। जय श्री ये माता दी जय भैया। श्री माता जी राम जय भैया। श्री माता जी भैया। जय श्री माता जी भैया। जी। भैया, हाँ, बोलिए। I was not today. I was not able to connect properly. You not you are not able to connect, Yeah, meaning to yeah. I Virat, mean, able to connect, or you are not able yeah. to meditate. No. I was not able to completely concentrate on my Virat. I had some pain in my leg, and every time my thoughts were going to that, I was trying to change my position. So I told mother, sorry, please forgive me for this. But then, I was not completely thoughtless today. Acha. Okay, and if you are having pain, then since how long have you been attending Virat? It's almost Virat I've been attending for the last 2 months. Before I used to attend the other meditation class. Okay. No, all meditations are the same. Pratishthan you attend Yeah, or Nirbandham you attend. yeah, It's all the same. yeah. Now, what's important is what are you doing for those pains? Those pains are joint pains, or No, you I got drink hurt and water. you're paining? I'm drinking water because I'm always sitting on the ground. No, there's a small callosity on my right ankle. So when it touches the ground, it hurts. Okay, and you're drinking this lukewarm water, 1.2 liters. Yeah. Every day I've Does been it have drinking. honey in it? It's almost 1 week. I mean, the pains have reduced, but today I was not able to bring my, they completely get involved in that. So a lot of disturbance. So I was like little. Okay, then you put your hand and you open your Brahmarandra. Okay. Use your hand. So what Yeah. happens is when you raise your hand up there, the Uh-huh. Kundalini rises, and along with the Kundalini, the attention rises up. Okay. So your Agnya, are you doing morning and evening Allah Akbar Yeah. and Lord's Prayer? No, I do Lord's Prayer, but Allahu Akbar, I should start. I think so. I should Yeah, please start. do that. Yeah. Even Agnya is hot. You put your hand on the Agnya and see once. No, Right sir. hand, No, bhaiya, right it's hand. cool. Yeah, it's cold. It's cool. Yeah, it's cool. Okay, and what happened to what's with the left hand? Are you absorbing cool air? No, I don't feel anything. Yeah. So yeah, it is cool more because of the reason that your Vishuddhi is not open. Just do Allah Akbar also morning and evening. So you become sensitive. Is it hot or cool Okay. properly? Okay. 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 So please do Allah Akbar and Lord's Prayer morning and evening. So you'll become sensitive which chakras are blocking. Okay. Okay. Then also open your Brahmarandra. Okay. Okay. Now you're able to observe your thoughts. Yeah, but I mean, it's like I'm concentrating, it's not. No, don't concentrate. We don't have Yeah, to concentrate at all. yeah, Just yeah. observe. Where is your attention? Observe where is your attention first. It's जय going to श्री my माता जी भैया। back Agnya. जय श्री Okay. माता जी भैया। You do that. Once do that regularly, Allah Akbar, Lord's Prayer, and open the Brahmarandra. No, that's Okay. all. After that, it will become very stable. The Sushumna will यस become. माता जी भैया। Okay. Jeshma Didi. Thank you, भैया भैया. मेरे Thank you, राइट भैया. एल्बो में दर्द रहता है, मतलब बैक आज्ञा क्लियर नहीं कर पाते, ऐसा उठा नहीं पाती। हाँ, बैक आगने के लिए अभी हम शूबीट में होगा, बैक आगने क्लियरेंस भी हो वो जाएगा। भैया एल्बो में दर्द रहता है, राइट एल्बो में। हाँ, जो भी दर्द है वो आप पानी तो पी रहे हो ना? हाँ पी रहे भैया। हाँ, वो 1 पीजिए महीना उससे। हो गया। हाँ, और 1 महीना, हाँ 2-3 महीने में ठीक हो जाएगा, मगर उसमें शहद भी है ना? हाँ शहद, नींबू, नमक। हाँ, और अगर ठंडी के मौसम है, आपका ठंडा बहुत बहुत ठंड है, तो थोड़ा सा हाँ जिंजर भी डाल सकते हो, हाँ करते हैं। थोड़ा सा जिंजर डाल सकते हो, अदरक थोड़ा सा। अच्छा। हाँ, वो अच्छा है। माँ ने बोला अदरक और नींबू ना अच्छा है ठंडी के मौसम में लेना। जय श्री माता जी भैया। यशमत Yeah, दीदी। yeah. I have been joining for maybe like 9-10 months, but before that also I've been in Sahaj. So
my sensitivity has increased a lot after joining the Virat group. And I can start now to feel like really very good, strong vibrations. Today's meditation, the witness practice and guided by Srimataji, that was like out of this world. I was completely drenched in vibrations. I've never had a experience like that. And yesterday also in the shoe beating was very, very good. So Okay. you Very good. Very any good. suggestion for me? Please continue to attend the witness sessions. The same thing that we did here. We do it Yeah. 15 minutes every hour. So whenever Okay. you get time, if you can attend the witness sessions, what happens is the Virat is nothing but it's our collective, like you are one cell of this Virat, I am one cell of this Virat, and that's how the strength of the Virat is increasing. Okay. So as we continue to do this tapasya, like in the speech, Mataji said, this is a tapasya. You will have to do this tapasya now. And Okay. as we do, we become aware that we are not this just one cell. We are this Virat. We are part and parcel of the whole. And that is what is the difference that has happened in all realizations before 1970 and after 1970. The Okay. realization is given to not you and I, it is given to Virat. Shri Mataji Very- opened the Sahasrara of Virat. Mm. And then Mm. individually, we are opening our Sahasrara and joining that Virat. So attending the Virat witness sessions are very important. Please attend them and Okay. become Yeah. more and more aware that we are Virat. Okay. Okay. Thank you. It's made quite a significant leap, I would say, in being able to feel the vibrations. Thank you so much to your Virat team. Yeah. Jai Shri Thank Mataji. you, Mataji. Jai Shri Mataji. माँ ने चित्त निरोध का भी बोला है. Shrimati just told in the speech about चित्त निरोध also. First we start with चित्त निरोध. Like in witness sessions, we start with चित्त निरोध. I mean, in fact, we start with in witness sessions, हम लोग ब्रह्मरंध्र खोलने से शुरू करते हैं. उसके बाद चित्त निरोध होता है. चित्त निरोध करना भी विटनेस बहुत सेशन कब होता है भैया? 4 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक हर घंटे 4 से 4:15, फिर बाद में 9 से 9:15, 10 से 10:15, 11 से 11:15, ऐसा ऐसा 6 बजे तक, अच्छा, और फिर रात को मेरा 10 बजे. मेरा भैया चित्त नहीं कंट्रोल होता है, चित्त इधर उधर भटकता है ध्यान करते हैं तो. हाँ हाँ, तो आप ब्रह्मरंध्र खोल लीजिए. वही ब्रह्मरंध्र खोलने का एक्सरसाइज करते हैं विटनेस सेशन कैसे? में. अच्छा, उसमें विटनेस सेक्शन में क्या 4 बजे से हाँ, एवरी डे? एवरी डे, हर घंटा. अच्छा, ओके. जय इसी लिंक पे ना भैया? इसी लिंक, इसी जूम लिंक पे. अच्छा, ओके भैया. जय श्री माता. जय श्री. ये चित्त निरोध प्रैक्टिस करिए. ब्रह्मरंध्र खोलना है पहला स्टेप, उसके बाद चित्त निरोध, फिर बाद में आप यू नो ब्रह्मरंध्र के ठीक नीचे जो हृदय के पीठ है वहां रह सकते हैं. अलग अलग हर 15 मिनट में अलग अलग प्रैक्टिस कराया जाता है जो माँ के स्पीच से जुड़े हैं. Many things that are taught in every speech, Mataji gives something new. Like even in this speech, there are so many things that she gave, but we have to practice. तो इसलिए क्या करते हैं सब लोग वो स्पीच बार बार सुनते हैं, बार बार अपने अंदर परिवर्तन होता है. Every time that we listen to that speech, something changes in us. मेरा ब्राह्मणन बहुत भारी लगता है, ऐसा लगता है खींच रहा है खूब. हाँ, तो प्रैक्टिस करिए, खोलिए. भैया ये स्पीच आप डाल देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में? जरूर. हाँ, भैया मेरा नंबर व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिएगा, जुड़ा हुआ नहीं है. अच्छा, जुड़ा नहीं है तो आपको वेबसाइट से जुड़ सकते हैं. वेबसाइट है विराट डेली मेडिटेशन मैं रूटीन. वैसे ही अभी जूम से जुड़ी हूँ, जो जूम में वेबसाइट आया है ना, मुझे 1 वीक हुआ है. मैं तो यूट्यूब पे देखी जुड़ रही थी, तो मैं स्पीक नहीं कर बोल नहीं पा रही थी. फिर मैं कोशिश की तो जूम से उसको जोड़ा है अभी, हाँ, तब मैं जूम आपसे से. बात कर पा रही हूँ. हाँ हाँ, लेकिन जूम. जो आप उसमें सामान भेजेंगे वो मुझे मिलेगा नहीं ना, हाँ, तो वहाँ का जिसने भी लेक्चर आपको से. जूम का लिंक दिया ना, उससे पूछ लीजिए कि मेरे को जोड़ किसी ने दे. नहीं दिया है, मैं तो यूट्यूब से निकाली हूँ. अच्छा, जहाँ ये लिंक है वहां व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक होगा, देखिए. ओके,
ठीक है, चलिए अपने दोनों चप्पल ले आइए, दोनों शूज ले आइए, प्लीज गेट बोथ योर चप्पल्स एंड शूज नाउ। मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ, आई एम म्यूटिंग ऑल, क्योंकि अभी शू बीट शुरू होने वाला है। जयश्मत दीदी। जय श्रीमती जी। दीदी आपको होस्ट कर दिया है मैंने। यस भैया। ओके, ओवर टू यू दीदी। जय श्रीमती जी। जयश्मत। जय श्रीमती जी, सबको जय श्रीमती जी। जय श्रीमती जी टू ऑल। Anyhow, since 5 o'clock, we are on above Sahasrara, Brahmarandra, and feeling vibrations in the brain. Now let us take our both the hands towards sky. अब हम सुबह से 5 बजे से चैतन्य में ही है, सहस्रार के ऊपर, ब्रह्मरंध्र में, मस्तिष्क में। तो अब हम आकाश तत्व से जुड़ेंगे, दोनों हाथ आकाश की तरफ। चित्त सहस्रार में है, अब हम हमारी कुंडली माँ को महसूस करेंगे और मन ही मन आकाश देवता को स्तुति करेंगे। आकाश देवता के सहायता के कारण हम विराट तक पहुंच सकते हैं। आकाश देवता ही विराट है। विराट स्वरूप दिखने का, हमारे आंख में जो दिखता है वो आकाश है, उसके ऊपर भी है, मगर हम देख पा रहे हैं आकाश को। तो आकाश से जुड़ने से, विराट से जुड़ना बहुत आसान होता है। हम उनकी मदद मांगेंगे। Let us praise Akash Devata. With his help only we can reach up to Virata. He himself is the part of Virata. We can see him. So let us praise him and ask him to bless us with Akasha Tattva, sky element, ether element. हे आकाश देवता, कृपा कर हमें आकाश तत्व प्रदान कीजिए। हमें विराट से जुड़ने की मार्ग को प्रशस्त करने की कृपा कीजिए। Please bless us with ether element. हम 10 उंगलियों में चैतन्य को, आकाश तत्व को महसूस करेंगे। अब हम अल्लाह अकबर बोलेंगे हमेशा की तरह 16 बार। गर्दन को सीधा करेंगे, आंख खुला रहेगा, चित्त सहस्रार में खड़े होके हम बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। और जब हम अल्लाह बोलते हैं, हमको मुंह को पूर्ण रूप से खोलना है, बहुत बड़ी चिल्ला के बोलने की जरूरत नहीं है। As usual, let us chant Allah Akbar. Let us stand and chant, keeping attention on Sahasrara with open eyes. When we say Allah, we have to open our mouth fully, not necessary to say loudly. Now let us start. शुरू करेंगे। अल्लाह अकबर, 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 अल्लाह
Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों हाथ आकाश की तरफ लेंगे, सभी उंगलियों को और गले की विशुद्धि को हम महसूस करेंगे। लेट अस टेक बोथ द हैंड टुवर्ड्स स्काई, ऑब्जर्व ऑल द 10 फिंगर्स एंड फिजिकल विशुद्धि। वी कैन सिट नाउ। अब हम बैठ सकते हैं। हम ज्यादा बार भी अल्लाह अकबर बोल सकते हैं। किसको एसिडिटी है, हीट है बॉडी में, ज्यादा बार अल्लाह अकबर बोलने से विशुद्धि ठंडा रहेगा। मगर कम से कम 16 बार बोलना जरूरी है। विशुद्धि में 16 पंखुड़ियां हैं, तो इसलिए 16 बार बोलना है। We can chant Allah Akbar more times also till we get cool in our physical Vishuddhi. But minimum 16 times you have to chant. दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करेंगे। थैंक यू आकाश देवता, थैंक यू वेरी मच। अब हम सूर्य देवता को देखेंगे। अगर सूर्य देवता नहीं है तो पूर्व की दिशा में हम चेहरा करेंगे। लेट अस लुक एट सन। इफ देयर इज नो सन, लेट अस फेस टुवर्ड्स ईस्ट। श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री सूर्य देवता हो। ओम त्वमेव साक्षात श्री सूर्य देवता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। श्री माता जी, कृपा कर हमें श्री सूर्य देवता की समस्त गुण और शक्तियां और ज्ञान प्रदान करने की कृपा कीजिए। कृपा कर हमारे पिंगला नाड़ी में श्री हिरण्य गर्भिणी शक्ति स्थापित करने की कृपा कीजिए। हमारे इड़ा नाड़ी को और बैक आज्ञा को संतुलन प्रदान करने की कृपा कीजिए। Sri Mataji, you are Saksha Shri Surya Devata. Please bless us with all the qualities, powers, and knowledge of Shri Surya Devata. Please establish Shri Hiranyagarbhini Shakti in our Pingala Nadi. Hiranyagarbhini Shakti is the cool power of Surya Devata. Hiranyagarbhini Shakti Shri Surya Devata की ठंडक है, ठंडा वाला शक्ति है। Please cleanse and energize our, nourish our Ida Nadi and back ajna. सूर्य देवता को प्रणाम करेंगे। लेट अस डू प्रणाम टू सूर्य देवता। अब हमेशा की तरह हम सुषुम्ना नाड़ी में हमारी चित्त को एक एक बीज मंत्र बोलते हुए लेके जाते हुए गायत्री मंत्र बोलेंगे। नाउ लेट अस चैंट गायत्री मंत्र, टेकिंग our attention in Sushumna Nadi while chanting Bija Mantra related chakras.
सूर्य देवता को देखेंगे। लेट अस लुक एट सूर्य देवता विदाउट ब्लिंकिंग। आंखों को हमको झपकना नहीं है, पलके नहीं झपकना है। सूर्य देवता नहीं है तो भी पूरब की दिशा में देखना है। ओम भू मूलाधारा, ओम भुवः स्वादिष्टान, ओम स्वः मणिपुर नाभि चक्र, ओम महः अनाहत, ओम जनः विशुद्धि, ओम तपः आज्ञा। अब हम ब्रह्मरंध्र से बाहर आएंगे। नाउ लेट अस कम आउट ऑफ ब्रह्मरंध्र। लेट अस टेक अवर अटेंशन थ्रू ब्रह्मरंध्र टू सहस्रार। सहस्रार में आएंगे। ओम सत्यम, ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। चित्त को थोड़ा ऊपर उठाएंगे। लेट अस लिफ्ट अवर अटेंशन लिटिल हायर। ओम आपो ज्योतिरसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरो। चित्त को आकाश की तरफ छोड़ देंगे। लेट अस लीव अवर अटेंशन टुवर्ड्स स्काई एंड ऑब्जर्व। हमारी कुंडली में अभी आकाश की तरफ बह रही है, हम ये इसको महसूस करेंगे। इसी प्रकार अब और 2 बार फिर से कहेंगे। लाइकवाइज लेट अस चैंट 2 मोर टाइम्स। ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम, ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओमापो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरो। ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम, ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओमापो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरो। कुंडली मां का आनंद लेंगे। लेट अस एंजॉय मदर कुंडलिनी फ्लोइंग टुवर्ड्स स्काई विद मोर प्रेशर एंड वाइड। बहुत मोटे तरीके से और बहुत फोर्स के साथ बह रही है, हम महसूस करेंगे। हम सूर्य देवता को प्रणाम करेंगे। लेट अस डू प्रणाम टू सूर्य देवता एंड टेक टर्न बैक। हम पीछे मुड़ लेंगे। सूर्य बैक आज्ञा सूर्य देवता की तरफ। बैक आज्ञा टुवर्ड्स सूर्य देवता, लेफ्ट हैंड टुवर्ड्स स्काई। लेट अस कीप आवर राइट हैंड ऑन बैक आज्ञा, कीपिंग अटेंशन ऑन बैक आज्ञा 2 फ्रॉम अबव सहस्रार टू बैक आज्ञा। लेफ्ट हैंड आकाश की तरफ, बाएं हाथ आकाश की तरफ, दाएं हाथ बैक आज्ञा में। हम अभी सहस्रार के ऊपर से चित्त को बैक आज्ञा में भी रखेंगे। श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री महागणेश हो, महाभैरव हो, महाहिरण्यगर्भा हो। कृपा कर हमारे बैक आज्ञा में आइए मां। हम बैक आज्ञा में श्री माता जी का कुंडलिनी रूप में पहुंचते हुए महसूस करेंगे।
Shrimataji, you are Saksha, Shri Mahaganesha, Mahabhaira, Mahahiranyagarbha. Please come in our back ajna. Let us observe. हम अब प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी, मुझसे, मेरे परिवार से, मेरे पितरों से, मातृकुल पितृकुल के पितरों से, ससुराल की तरफ के पितरों से और मेरे जन्म जन्मांतरों में जाने अनजाने में सत्य के विरुद्ध में, आदि शक्ति के विरुद्ध में कोई भूल हो गई हो श्री माता जी, कृपा कर हम सबको क्षमा कीजिए माँ। श्री माता जी, कृपा कर हम सबको क्षमा कीजिए और आत्मोन्नति प्रदान करने की कृपा कीजिए। श्री माता जी, हमारे पितरों को क्षमा करके उनको आत्मोन्नति प्रदान करने की कृपा कीजिए और उनके दुष्प्रभाव को हमारे सूक्ष्म तंत्र से दूर करने की कृपा कीजिए श्री माता जी। ये आप ही कर सकती हो श्री माता जी, कृपा कीजिए, दया कीजिए श्री माता जी। श्री माता जी, please forgive us if we have committed any mistakes by me, my family members, my ancestors of parents side and in-laws side, and in my past life. Please forgive all of us the mistakes committed by us, knowingly or unknowingly, against the truth, against the Adi Shakti. Shri Mataji, please forgive us and bless us with assent. Shri Mataji, please forgive our ancestors and bless them with assent, and please remove their effects from our subtle system. Shri Mataji, only you can do this. Please help us. अब हम राइट हैंड धरती माता की तरफ लेंगे, नजर धरती माता की तरफ, चित्त बैक आज्ञा में और सहस्रार में या सहस्रार के ऊपर। Now let us take our right hand towards Mother Earth. Let us look at Mother Earth, keeping attention on back ajna and above sahasrara. जिस चीज को बैक आज्ञा में तकलीफ बहुत ज्यादा है, रोज इसको करना है हमको। श्री माता के सामने भी कर सकते हैं करते समय, मगर बैक लेफ्ट स्वादिष्टान में हमको एक कैंडल जलाना है पीछे से। All our suffering from back ajna, we have to do this one daily, and we can do in front of Shri Mataji also if you don't have time in the morning. Keeping candle in the back side to left swadhisthana and prayers on back ajna, keeping right hand on back ajna. श्री माता जी, कृपा कर हम सबकी बैक आज्ञा को शुद्ध कीजिए, कृपा कीजिए श्री माता जी।
Shri Mataji, please cleanse our back ajna. Now let us take both hand towards sky. Let us look at sky and connect Sahasrara with Akash Devata also. बैक आज्ञा सहस्रारायण आकाश देवता दोनों हाथ आकाश की तरफ लेंगे, आकाश देवता को देखेंगे। अब हम चित्त बैक आज्ञा में, सहस्रार में, आकाश देवता में, तीनों जगह रखेंगे। बैक आज्ञा सूर्य देवता की तरह रहेगा, हम इसी तरह पीछे मुड़ के बैठ जाएंगे। श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री आकाश देवता हो, कृपा कर हमारे माध्यम से बहने वाला आपके चैतन्य को स्वीकार कीजिए और पूर्ण परिसर में, पूर्ण विश्व में फैलाने की कृपा कीजिए। श्री माता जी, श्री माता जी, please receive the vibrations flowing through us. Please spread it in all over the area and all over the world. श्री माता जी, इस चैतन्य के माध्यम से पूर्ण विश्व में शांति को और प्रेम को स्थापित करने की कृपा कीजिए। श्री माता जी, प्लीज एस्टैब्लिश पीस एंड लव ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये चैतन्य इफेक्टिव होना है तो हम सभी उंगलियों से चैतन्य को बहाना है, तो हम देखेंगे हर एक उंगली से चैतन्य निकल रहे हैं या नहीं। To make this cloud vibration effective, we have to flow the vibration in on the fingers, on the tattvas. So let us observe on the fingers. Each and every finger is emitting, flowing vibration or not. When each and every Sahajogi cleanses all the elements within him or her, the Purna Virata is get cleansed. This is the technique Srimataji told in one speech. The Moola essence is within human body. All the 5 elements, the essence is within human body. When it gets cleansed, the Virata gets cleansed automatically. जब मानव के अंदर वो मूल रूप में पंच तत्व है, वो शुद्ध होता है, तो विराट पूर्ण रूप से शुद्ध होता है। तो ये आसान तरीका है हमको खुद को, हमारे अंदर की पंच तत्वों के मूल को शुद्ध करना है।
इसलिए हम सभी उंगलियों में चैतन्य एमिट हो रहा है या नहीं, बह रहा है या नहीं, देखेंगे। Let us observe all the fingers to emit all tattvas getting cleansed within us as sense. आकाश देवता को प्रणाम करेंगे। थैंक यू आकाश देवता, थैंक यू वेरी मच फॉर योर हेल्प एंड ब्लेसिंग्स। आकाश देवता को प्रणाम करके पीछे मुड़ लेंगे, टैप करेंगे बैक आज्ञा को। लेट अस टैप बैक आज्ञा एंड टर्न बैक। सूर्य देवता को प्रणाम करेंगे। थैंक यू सूर्य देवता, धन्यवाद आपकी सहायता के लिए और आपकी आशीर्वाद के लिए, धन्यवाद। कोटि कोटि प्रणामास आकाश देवता, कोटि कोटि प्रणामास सूर्य देवता, कोटि कोटि प्रणामास। हम चित्त को सहस्रार में रखेंगे, दोनों हाथों को गोद में लेंगे, कुंडलिमा को, ब्रह्मरंध्र को महसूस करेंगे। लेट अस टेक बोथ हैंड्स ऑन लैप, क्लोज आवर आईज, ऑब्जर्व बोथ द palms and सहस्रार। लेट अस टेक बंधन विद दिस वाइब्रेशन, इस चैतन्य से बंधन लेंगे। कुछ लोग बाद में जुड़ते हैं, इसलिए हम अभी शुभिट के पहले बंधन ले रहे हैं। पहले बंधन लेना चाहिए था, मगर बाद में जुड़ने वाले बंधन लेंगे या नहीं लेंगे हमें मालूम नहीं होता है, इसलिए हम इधर बंधन ले रहे हैं। शुभिट से पहले बंधन लेना बहुत जरूरी है। लेट अस टेक कवच, धीरे से चैतन्य को महसूस करते हुए कवच लेंगे। कवच लेने के बाद चैतन्य को महसूस करेंगे। लेट अस ऑब्जर्व द वाइब्रेशंस, changes in vibrations after taking bandhan and kavach. Now with these vibrations, let us clean the place where we are going to do shubit. जहां हम शुभिट करने जा रहे हैं उस जगह को हम बंधन देते हुए शुद्ध करेंगे। दोनों हाथ धरती माता के ऊपर। लेट अस कीप बोथ हैंड्स ऑन मदर अर्थ। श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री गणेश हो, आप ही साक्षात श्री आदि भूमि माता हो, कृपा कर हमें क्षमा कीजिए माँ। हम पूर्ण रूप से सहस्रार को और सुषुम्ना को महसूस करेंगे, निर्विचार हो जाएंगे। श्री माता जी, कृपा कर
हमें सामूहिकता में शोभित करने की अनुमति प्रदान कीजिए और हमें शुद्ध करने की कृपा कीजिए। आप ही साक्षात श्री सर्वकर्ता हो श्री माता जी, कृपा कीजिए। Let us observe our Brahmarandra and Sushumna. Let us get into thoughtlessness. Shri Mataji, you are Saksha Shri Ganesha. You are Saksha Shri Adibhumi Mata. Please forgive us for this action. Shri Mataji, please permit us to do collective shubit and please cleanse us. Shri Mataji, verily you are the doer. We do nothing, Shri Mataji. धरती माता को प्रणाम करेंगे. Let us do pranama to धरती माता. Once again give बंधन to the place. फिर से बंधन देंगे. अब हम विशुद्धि फिंगर से सर्कल डालेंगे. राम भैया, आर यू देयर? राम भैया, ओके. इसमें हम लिखेंगे दुनिया में अशांति फैलाने वाले सभी प्रकार की आसुरी शक्तियां. ये आज हम जो पॉलिटिकल इस बैनर के आड़ में अशांति फैला रहे हैं उसके लिए कर रहे हैं. ये कृषि के नाम पे हो, किसी भी प्रकार के हो, सभी आसुरी शक्तियां इकट्ठा होके जिंदगी को, मानव को जीवन दुस्तर बना रहे हैं. तो देश की संपत्ति को नाश कर रहे हैं. इसके लिए हम कर रहे हैं. टुडे वी आर डूइंग दिस फर्स्ट सर्कल फॉर ऑल दोस आसुरी शक्तिस which are destroying or disturbing the peace in the name of any of their banners like agriculturists. But this is all these are political and asuri shaktis gathering. So let us do shubit for all those things. These people are destroying the national wealth and disturbing the human peace, livelihood also. सभी प्रकार की आसुरी कृषि संगठनाएं, सभी प्रकार की आसुरी राजकीय संगठनाएं लिखेंगे हम इधर. सभी प्रकार की आसुरी दुष्ट शक्तियां, इधर हम अगुरु सभी प्रकार की अशुद्ध विद्या करने की प्रयोग करने वाले आसुरी शक्तियां. इसमें अगुरु को गुरु भी आसुरी शक्ति के अंदर आ गए हैं. तो अभी हम इसको बंधन देंगे. ऑल टाइप्स ऑफ आसुरी इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशन, all types of asuri political institutions, all types of asuri is rakshasa vrittis, violent groups like ICI, so many are there, all are there, and all types of ashuddha vidya practitioner asuri shaktis, all types of asuri shaktis practicing ashuddha vidya, all types of asuri shaktis destroying national wealth, all types of asuri shaktis disturbing human life. सभी प्रकार की आसुरी शक्तियां मानव जिंदगी को, जीवन को डिस्टर्ब करने वाले और सभी प्रकार की देश की संपत्ति नाश करने वाले आसुरी शक्तियां.
अब हम इसको बंधन देंगे. लेट अस गिव बंधन. कीपिंग अटेंशन ऑन सहस्रार एंड चैतन्य. सहस्रार में और चैतन्य में चित्त को रखते हुए बंधन देंगे. इसको हम पूर्ण दिल से आज शोभित करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में राजकीय करते हुए अशांति का फैला रहे हैं. इसके ऊपर हम हाथ रखेंगे, ऊपर थोड़ा 2 इंच 3 इंच ऊपर. लेट अस सरेंडर all these asuri shaktis at the lotus feet of Shri Mataji. Shri Mataji, please maintain peace and love all over the world and destroy all these asuri shaktis. Shri Mataji, कृपा कर पूर्ण विश्व में शांति को और प्रेम को स्थापित करने की कृपा कीजिए, और पूर्ण रूप में ये आसुरी शक्तियों को नाश करने की कृपा कीजिए. हम देखेंगे चैतन्य बह रहा है या नहीं. लेट अस ऑब्जर्व whether vibrations are flowing or not. Yes. Now let us take left chappal and give बंधन. चप्पल को बंधन देंगे. दोनों चप्पल को एक साथ भी बंधन दे सकते हैं. और लेफ्ट चप्पल लेंगे, इसको हम चैतन्य देंगे. लेट अस टेक लेफ्ट चप्पल एंड give bandhan and give some vibrations. Now, as usual, looking towards sky, observing all the protocols, keeping attention on Sahasrara or above Sahasrara, watching left palm, being thoughtlessness, respecting mother. We beat very slowly. हमेशा की तरह आकाश की तरफ देखते हुए चित्त को सहस्रार में या सहस्रार के ऊपर, और लेफ्ट हैंड को बाएं हाथ को महसूस करते हुए पूर्ण निर्विचारिता में रहते हुए बहुत हल्के हाथों से धरती माता का आदर करते हुए हम शुभित करेंगे. लेट अस स्टार्ट. शुरू करेंगे. मन ही मन हम प्रार्थना कर सकते हैं, श्री माता जी कृपा कर पूर्ण विश्व को इन आसुरी शक्तियों से मुक्त करने की कृपा कीजिए, इन सब की नाश करने की कृपा कीजिए श्री माता जी. जो चैतन्य अंदर आ रहा है उसको आने देंगे. The nectar is flowing in. Let us allow it to flow inward. हम राइट मूलाधार को एक बार अटेंशन डालेंगे सहस्रार के ऊपर से.
सहस्रार के ऊपर में रहते हुए राइट मूलाधार को देखेंगे. Let us observe right Muladhara from above Sahasrara. Yes, सहस्रार के ऊपर जाएंगे. इधर से हम भवसागर को देखेंगे. From above Sahasrara, let us observe भवसागर. All this भव हम अटेंशन डालेंगे शुद्ध होने के लिए. ओके, थैंक यू श्रीमाता जी. हम स्टॉप करेंगे. अच्छे से सभी उंगलियां फ्लो हो रही है, सहस्रार भी फ्लो हो रहे हैं. लेट अस स्टॉप. थैंक यू श्रीमाता जी. अब हम इसको इकट्ठा करके आकाश की तरफ बढ़ाएंगे. लेट अस कलेक्ट दिस एंड थ्रो टुवर्ड्स स्काई. Once again, let us cleanse this place, giving बंधन. फिर से हम इस जगह को शुद्ध करेंगे बंधन देते हुए. सेकेंड सर्कल, दूसरा राउंड विशुद्धि की उंगली से. इधर अपना अपना नाम लिखेंगे. दिस इज पर्सनल राउंड. लेट अस राइट आवर नेम. हमारा अपना अपना नाम लिखेंगे. ईगो, सुपर ईगो, अहंकार, प्रतिअहंकार, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एंड सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, हीनता की भावना और श्रेष्ठता की भावना, अगुरु की समस्याएं, कुगुरुओं की समस्याएं, अगुरु प्रॉब्लम्स एंड कुगुरु प्रॉब्लम्स, ऑल टाइप्स ऑफ अशुद्ध विद्या, सभी प्रकार की अशुद्ध विद्याएं, अशुद्ध इच्छाएं, हमारे अंदर की इम्प्यूरिटी, अपवित्रता, इम्प्यूरिटी, ऑल टाइप्स ऑफ राक्षसी वृत्ति प्रवृत्ति, सभी प्रकार की राक्षसी वृत्ति प्रवृत्तियां, अशुद्ध चित्त, impure attention of others on me, repeatedly moving my attention on others, बार बार दूसरों के ऊपर जाने वाला मेरा चित्त, अरिषड वैरियां, 6 subtle enemies, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, अशांति, असमाधान, असंतोष, असंतृप्ति, insatisfaction, attachments, लोभ, greediness,
भेदभाव की मनोभावना, डिफरेंशिएटिंग मेंटालिटी, जजिंग क्वालिटी विद इन अस, साक्षी भाव की कमी, लैकिंग इन विटनेस स्टेट, लैकिंग इन स्वीटनेस, माधुर्य की कमी, क्षमाशीलता की कमी, लैकिंग इन फॉरगिवनेस, लैकिंग इन इंटीग्रेशन, समग्रता की कमी, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक असंतुलन, physical, mental and emotional imbalances, problems from family, neighbors, friends, society and from working place, परिवार से, समाज से, आजू बाजू में रहने वालों से, परिवार से, पितृओं से और कार्य क्षेत्र से आने वाले सभी प्रकार की समस्याएं, प्रॉब्लम्स फ्रॉम एंसेस्टर्स। अभी आपको कुछ लिखना है जो आपकी आत्मोन्नति के मार्ग में आड़ रहे, उसको लिखिए, भौतिकवाद में नहीं जाइएगा प्लीज। If you want to add any point which disturbs your meditation, please write only that one, not worldly points. If it is over, अगर हो गया तो हम फिनिश करेंगे। मेरे आत्मोन्नति के मार्ग में आड़ आने वाले सभी प्रकार के सूक्ष्म अति सूक्ष्म अड़चने और बाधाएं, all types of minute problems and badhas in the path of my ascent. Now let us give bandhan keeping attention on sahasrara and vibration. चैतन्य के ऊपर चित्त रखते हुए और सहस्रार में चित्त रखते हुए हम बंधन देंगे धीरे से। इसको हम खुद श्री माता जी के चरण कमलों में छोड़ देंगे। नाउ लेट अस सरेंडर आवरसेल्फ एट द लोटस फीट ऑफ श्री माता जी। खुद प्रार्थना करेंगे। अब हम राइट चप्पल लेंगे। लेट अस टेक राइट वाला चप्पल एंड गिव बंधन एंड वाइब्रेशन। बंधन देंगे और चैतन्य देंगे। अब हमेशा की तरह हम पूरा प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए शू बीट शुरू करने वाले हैं। शुरू करेंगे। फॉलोइंग ऑल द प्रोटोकॉल्स लेट अस स्टार्ट शू बीटिंग। स्टार्ट। अब हम सहस्रार से या सहस्रार के ऊपर से स्वादिष्टान को देखेंगे। लेफ्ट स्वादिष्टान को देखेंगे। लेट अस ऑब्जर्व लेफ्ट स्वादिष्टान फ्रॉम सहस्रारा और अबव सहस्रारा। नॉट टू कम डाउन। सहस्रार से नीचे नहीं आना है हमको।
सहस्रार के ऊपर से हम विशुद्धि को देखेंगे. लेट अस ऑब्जर्व विशुद्धि फ्रॉम अबव सहस्रार. विशुद्धि और नाभि को एक साथ देखेंगे. लेट अस ऑब्जर्व नाभि एंड विशुद्धि टुगेदर. सेंटर नाभि, सेंटर विशुद्धि. अब हम सहस्रार के ऊपर जाएंगे और उधर से आज्ञा को देखेंगे. नाउ लेट अस मूव अबव सहस्रार एंड फ्रॉम देयर लेट अस ऑब्जर्व होल ब्रेन. आज्ञा, ईगो, सुपर ईगो, अहंकार, प्रति अहंकार दोनों को देखेंगे. बैक आज्ञा, फ्रंट आज्ञा सब देखेंगे. पूर्ण रूप से सहस्रार के ऊपर लेट अस मूव अबव सहस्रार. पांचों उंगलियों को महसूस करेंगे. लेट अस ऑब्जर्व ऑल द 5 फिंगर्स ऑफ लेफ्ट palm. भवसागर, सहस्रार, मूलाधार, ईच एंड एवरी चक्र सभी इसको देखेंगे लेफ्ट palm में. ओके, थैंक यू श्रीमती जी, थैंक यू. स्टॉप करेंगे. लेट अस स्टॉप. कलेक्ट दिस एंड थ्रो टुवर्ड्स स्काई. इसको इकट्ठा करके आकाश की तरफ उड़ाएंगे. धरती माता को शुद्ध करेंगे बंधन देते हुए. जब तक हमारे हाथ में चैतन्य महसूस हो तब तक बंधन देते रहेंगे. लेट अस गिव बंधन till we get vibrations from this place. हम हाथ को इस जगह के ऊपर रखेंगे 2-3 इंच ऊपर. Let us take our hand above this place. Let us pray. Shri Mataji, please establish Shri Ganesha principle in this place. श्री माता जी कृपा कर इस जगह में श्री गणेश तत्व को स्थापित होने दीजिए.
अब हम चप्पल को बंधन देंगे. लेट अस गिव बंधन टू द चप्पल्स. गिव सम वाइब्रेशंस. चैतन्य भी देंगे चप्पल को. अब हम दोनों हाथों को शुद्ध करेंगे बंधन देते हुए. लेट अस क्लीन आवर बोथ द हैंड्स गिविंग बंधन. अब हम दोनों हाथ धरती माता के ऊपर. लेट अस कीप बोथ द हैंड्स ऑन मदर. लेट अस फील हर लव. धरती माता की प्रेम को, हमारे लिए उन्होंने कितना कष्ट है, उसका प्रेम को हम महसूस करेंगे. थैंक यू श्री गणेशा. थैंक यू आदि भूमि माता. थैंक यू श्री माता जी. आपने हमें शुद्ध करने की कृपा किया. धन्यवाद माँ. आपके चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम. कोटि कोटि प्रणाम. थैंक यू श्री माता जी. जो हमारे हाथों में चैतन्य महसूस कर रहे हैं, श्री माता जी के प्रेम को, उस प्रेम से हम बंधन लेंगे. कुंडलिनी माँ को उठा के धीरे से पूर्ण भक्ति भाव से बंधन लेंगे. लेट अस टेक बंधन विद दिस वाइब्रेशंस. Thank you, Shri Mataji. Thank you all. Jai Shri Mataji to all. Have a nice day. Have a blessed day. अगर किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हो. दीदी थैंक यू वेरी मच. बहुत अच्छा था. जय श्री माता जी. जय श्री माता जी. जय श्री माता जी. बहुत क्लीन कर दिया आपने. बहुत अच्छा था. जय श्री माता जी. जय श्री माता जी. बहुत अच्छा कराते हैं आप. बहुत अच्छा. जय श्री माता जी. थैंक यू. जय श्री माता जी. जय श्री माता. जय श्री माता जी. जय श्री माता जी दीदी. जय श्री माता जी. आज दी जिस समय आपने बैक आज्ञा के लिए, फ्रंट आज्ञा के लिए सूर्य देवता के सामने प्रेयर कराया था, उस समय सहस्रार से बहुत बहुत ज्यादा चिल्ड वाइब्रेशंस महसूस हुए. बहुत लगभग 1 इंची 2 इंची के डायमीटर में. और दीदी उसके बाद में शुरू मीटिंग के टाइम में श्री माता जी की परम कृपा में लेफ्ट पाम में, मतलब हथेली में, सभी उंगलियों में बहुत जबरदस्त चिल्डनेस, ठंडक थी. एक एक ऐसा लग रहा था कि आपके साउंड के साथ में श्री माता जी की कृपा में वो कार्य हो रहा है. महसूस कर पा रहे थे. श्री माता जी की असीम कृपा से, श्री माता जी की असीम कृपा से होती है. जय श्री माता जी. जय श्री माता जी. जय श्री माता. जय श्री माता जी. जय श्री माता जी. कर्ता कर्विता श्री माता जी है. जय श्री माता जी. जय श्री जय श्री माता माता जी. जी. जय श्री माता जी. बोलिए भैया. हाँ, मैं पूछ रहा था कि आप ये जो बोल रहे हैं कि हम सहस्रार से देख रहे हैं, ये मतलब कैसे है? ये समझ नहीं पाया मैं. हम सहस्रार में रहेंगे और जब आप ड्राइव करते हो, आप ड्राइविंग नजर आपकी रोड में रहता है, मगर आप क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर सब चेंज करते हो. और उसके साथ साथ फोन आया तो फोन पे भी बात करते हो. उसके साथ साथ कार में जो बैठे हैं आपके साथ में, उनसे भी बात करते हो, है ना. उसी तरीके से हम सहस्रार में रहते हुए अलग अलग चक्रों के ऊपर हमारा अटेंशन डालेंगे, रहेंगे सहस्रार में. उधर से दूसरे चक्र को हम देखेंगे ताकि उधर का जो जड़त्व जाके चैतन्य की अनुभूति हमें हो सके. हाँ, फिर मैं ऐसा ही समझा था. मैं ठीक समझा था, मतलब कंफर्म करने के लिए पूछ लिया. हाँ, थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू दी. सो ब्यूटीफुल फीलिंग्स. जय श्री माता. जय श्री माता. जय श्री माता जी. माता जी. दीदी जय श्री माता जी.
थोड़ा देर से जुड़ी थी। आकाश वो जब क्लाउड वाइब्रेशन दे रहे थे, इसके पहले क्या वो विशुद्धि क्लियर किया, अल्लाह अकबर बोला था। अल्लाह अकबर बोले थे, अल्लाह अकबर। अभी कर लेते ना। हाँ हाँ, कभी भी कर, अल्लाह अकबर दिन में कितने भी बार कभी भी कर सकते। जय श्री माता जी। किस किस को बोलना है वो लोग सिर्फ अनम्यूट कीजिए, किसको बात नहीं करना है म्यूट करके रखिए प्लीज। हो गया, अब मैं अभी एंड करूं सेशन को। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी दीदी। जय श्री माता जी। दीदी बहुत अच्छा क्लियरेंस हुआ है और बहुत अच्छा स्थिति बनने जा रहा है, श्री माता जी कर रही है। श्री माता जी की कृपा है। जय श्री माता जी। ओके, थैंक यू श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी दीदी। जय श्री माता जी। ओके, लेट अस एंड द सेशन। सेशन एंड करेंगे।